I think it will be all Dr. Hafsan was. No, he said he's reloading. No, don't keep me all. I don't even know what I'm doing here, but No, he will ask you a question and just you will answer those questions based on your experience with COVID patients, vaccination. That's it. what I'm doing here, but No, he will ask you a question and just you will answer those questions based on your experience with COVID patients, vaccination. That's it. All right, so I think we are all live. So because I think our personal discussion somehow it was also part of the live stream. But anyways, we can just start. We are all online and we are live. So first of all, thank you very much for being part of this live stream. And for our viewers, I would like to tell them that today's discussion is about COVID-19 and vaccination. So we will talk about COVID-19 as a subject, what is going on in Pakistan, in rest of the world, especially the panel members, they are located in US. So we'll talk about what's going on as far as COVID-19 is concerned, especially in different states of United States of America. So आज की discussion basically जो सी है वो Urdu, that would be a combination of Urdu and English language both, because we want our message to be conveyed everywhere in the world. So depending on the questions, we can switch. Either we can take those questions in Urdu language. If there is someone who can't understand, who can't speak or conversate in Urdu language, then we will shift towards English language as well. So, but again, we'll try to keep a balance between Urdu and English language. So as far as myself is concerned, I think people in my network, they already know about me. Mera naam Noman Aziz hai, and frequently I come up with these kind of live stream sessions, and I invite professionals across different industries from different backgrounds, and we talk about different subjects related to management sciences, psychology, business development, and career development, and so on and so forth. But today's session is quite unique because we're going to talk about something which is quite hot in today's world. So आज का हमारा पैनल जो सा है that is very diverse. आज के पैनल में हमारे साथ ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, but they have settled in US and they are competent ones, they are highly professional in their field, and they are dealing with these topics on daily basis, especially related to COVID-19. So अगर मैं ये कहूँ कि ये वो लोग हैं जो कि COVID-19 की फाइट में who are the front runners, तो इसमें किसी किस्म की exaggeration नहीं होगी, because every day they are dealing with COVID-19 patients and they know this subject better than anybody else. मैं उस पर काफी बात कर सकता हूँ, but मेरी बात जो सी है that is dependent on news channels, that is dependent on articles, that is dependent on news and blogs, but I am not expert of this field. So definitely आज का panel जो सा है वो quite relevant है subject के लिए. So इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएं, हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, तो मेरा ख्याल है कि one by one I would like to have an introduction of our panel members. So maybe Hafsa, we can start with you. So you can just brief our viewers about you, what you are doing, what is your specialty, and how is it going in your state especially. Sure. Thank you so much for having me. So I'm Hafsa Nawaz. I am from Pakistan. I'm settled in Connecticut, US. I'm internist. Internal medicine is called primary care physician, where I see patients sick and chronic care management, both. On the other side, I'm a medical director of 4 nursing homes. And as you know that COVID-19 hit this elderly, frail population very hard. So I'm still dealing with nursing homes, but March, April, May was very, very hard. Not only because the COVID was at that time, it's just because we didn't know much about this. Now it's kind of, we got a little bit of idea how to deal with this virus. But at that time, things were changing on weekly basis, sometimes on daily basis. And it was challenging in a way. We were not prepared
how to deal with this virus. And second thing is, it was mentally, I think, as a physician, it was very tough. It was very tough because no matter what, you care about your patients, you care about their families, and there was no other disease I have ever encountered where uh, the toughest time of your life when you are dying and you have to be alone. You cannot be with your loved one. I think that was my lowest point. A couple of times when instead of their own family members, I would be the last person with them. So it was, mentally, it was tough time to deal with that, and especially we lost lots of patients, but we learned a lot too. Now I feel like we are much prepared. We are better how to deal with this disease. At least we can guide better. I don't know, we can cure, but we can guide families better. So that was my whole year of I will say professionally was one of my toughest year, in 2020. वेल हफ्सा, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे मज़ीद डिटेल में बात करें और आपसे पूछें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कैसे ट्रीट किया एज अ डॉक्टर, आप खुद भी वैक्सीनेटेड हुई. आई एम श्योर देयर आर मेनी डॉक्टर्स आउट देयर हु हैव बीन वैक्सीनेटेड. सो हमारे साथ जो दूसरे पैनल मेंबर हैं, ही इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल, और वो भी अपनी फील्ड के मास्टर हैं. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर बाबर रफ़ीक से कि वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि ऑडियंस को पता चले कि हु आर द पीपल ऑन बोर्ड टुडे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम जैसे कि नुमान ने कहा बाबर रफ़ीक है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एनेस्थीसिया का लोयोला यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में. और मेरी पेशेंट पॉपुलेशन मेनली पीडियाट्रिक्स है और कुछ एडल्ट्स होते हैं. और हम ऐसे पेशेंट्स जिनको या तो कोविड एक्टिवली है या जिनको कोविड हो चुका है उनको रोजाना की बुनियाद पे देखते हैं और उनको एनेस्थीसिया देते हैं. राइट, परफेक्टली फाइन. और जो तीसरे पैनल मेंबर हमारे साथ हैं वो भी डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, but he is dealing with different other stuff. For example, he is taking care of insurance and other administrative activities. He's not a practicing doctor, but by profession, definitely he's a doctor. So he can also provide us some insights about COVID-19 as a whole. And he has done some research as well in the past. And we had a session in the past which was about COVID-19. So हम उनसे भी पूछेंगे कि so सबसे पहले डॉक्टर सैफ आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ताकि लोगों को पता चले हु इज ऑन बोर्ड, सो देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद आवर सेशन फॉर्मली. जी, थैंक यू नुमान फॉर हैविंग मी. मेरा नाम सैफुल्ला, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं मैसाचुसेट में सेटल्ड हूँ. आई एम वर्किंग इन हार्वर्ड टीचिंग हॉस्पिटल, ब्रिंघम एंड विमेंस हॉस्पिटल, अटैच्ड विद हेमाटोलॉजी लैब, जहाँ पे हम काफ़ी सारी रिसर्च कर रहे हैं इंक्लूडिंग कोरोना वायरस आल्सो. हमारे हॉस्पिटल में अगर मैं देखूं तो मेजॉरिटी ऑफ आवर स्टाफ हैज़ बीन वैक्सीनेटेड और अब जो हमारा काम है वो वापस रूटीन में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये बताता चलूं कि हम 3 प्लेटफॉर्म पे लाइव है इस वक्त. वी आर लाइव ऑन लिंक्डइन, फेसबुक एंड यूट्यूब. जो लोग हमें फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, वो अगर हमारे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या जो डॉक्टर्स हैं पैनल पे उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो अपना सवाल जो उनसे वो चैट में टाइप कर सकते हैं. वक्तन फवक्तन वील चेक आउट हाउ मेनी रेलेवेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव इन द चैट बोर्ड, और वो क्वेश्चंस हम आपकी तरफ से इन डॉक्टर साहिबान से पूछेंगे. तो बाबर साहब, सबसे पहले तो आप बताएं, आपने भी बताया कि आप डेली बेसिस पे कोविड-19 पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो भी ओवरऑल क्या चल रहा है आपके ख्याल में, क्या सूरत हाल है, और आप इसको नियर फ्यूचर में किस सिम्त में जाता देख रहे हैं? अभी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मरीज हैं जिनको कोविड है और वो अस्पताल में एडमिट हैं. जैसे हमारे अस्पताल में इस वक्त तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग हैं जो आईसीयू में हैं जिनको कोविड का निमोनिया है. दे आर सीरियस, और उनमें से अक्सर को या तो ऑलरेडी वो वेंटिलेटर पे हैं या वो वेंटिलेटर पे किसी वक्त भी जा सकते हैं. तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी सीरियस डिजीज है. इससे बचना चाहिए, अगर बच सकें तो अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए. और जो लोग
जिनको निमोनिया हो जाता है या जिनको सीरियस डिजीज हो जाती है, उनके लिए बचना काफ़ी मुश्किल होता है। उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है बड़ा कॉमन है कि जिसमें उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जैसे गुर्दे, दिल या फेफड़े और खून की नालियाँ, इन सब में प्रॉब्लम होती है और वो उनकी ज़िंदगी काफ़ी खतरे में पड़ती है। तो ऐसे लोग तो बहुत मुश्किल में हैं। उसके अलावा जो दूसरी पॉपुलेशन हम देखते हैं वो है कि जिनको या तो कोविड-19 की डिज़ीज़ हुई लेकिन वो बहुत हल्की सी थी, या फिर अगर उनको कोविड-19 डिज़ीज़ हुई और अब वो ठीक हो चुके हैं। जिनको कोविड-19 डिज़ीज़ हुई और वो ठीक हो चुके हैं, जब हम उनको एनेस्थीसिया देते हैं या वो उनकी क्या कहते हैं खून में ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं तो अमूमन वो काफ़ी लो होता है। अगर जैसे एक आम आदमी जो कि जिसके फेफड़े और दिल सही काम कर रहा है उसका जो है ना उसको हम परसेंटेज में मेज़र करते हैं 97 या उससे ऊपर होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो खून से फेफड़ों से खून में जा रही है और जिस्म को फराहम हो रही है। लेकिन जो आपके मरीज़ जिनको कि कोविड-19 का निमोनिया हुआ, उनमें से अक्सर की जब हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं तो वो 91-92% होती है। उनमें से कुछ ऐसे मरीज़ भी मैंने देखे हैं जिनको 8 से 10 हफ्ते हो गए थे, ठीक हुए। वो कहते थे जी असीं ठीक हो गए हैं, हुण सानू कुछ नहीं हैगा। लेकिन लेकिन जब आप उनको देखते हैं, आप उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनके फेफड़े अभी भी सही काम नहीं कर रहे। इट इज़ अ वेरी सीरियस डिज़ीज़। यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, सबको बचाएँ, जितना भी बच सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप बचे हुए हैं तो ठीक है, अगर आपको होगी तो आपके जिस्म के अंदर वो अपने निशानात छोड़ के जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरी तरफ से है कि जब हम देखते हैं कि जिन लोगों को एक बार कोविड हो चुका है, क्या उनको दोबारा हो सकता है? क्योंकि बहुत शुरू में एक न्यूज़ थी कि जिन लोगों को एक दफ़ा कोविड हो गया, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एंड दे आर प्रॉब्ली इम्यून टू दिस डिसीज़। द सेकंड टाइम दे कैन नॉट बी विक्टिम ऑफ कोविड-19। well, इसके बारे में अभी तक बहुत सारा जो है ना वो अननोन है। मुझे याद है कि शुरू में जब चाइना से खबरें आ रही थी, चाइना और कोरिया में कुछ लोग रिपोर्ट हुए थे जिनको कोविड-19 कंफर्म पहले हुआ था और दोबारा हुआ। इसी तरह से कुछ यूके में और अमेरिका में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये रेयर हैं और अभी इसके बारे में जो है ना हतमी कोई बात नहीं की जा सकती कि हाँ जी ये जिसको एक दफ़ा हुआ उसको दोबारा हो सकता है या जिसको एक दफ़ा हुआ दोबारा कभी नहीं होगा। अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अननोन। ये वक़्त के साथ-साथ जब मेरा ख़्याल है कि 4-5 साल हो जाएंगे इस बीमारी को हमारे साथ रहते हुए, तब तक हमें पता चलेगा कि भाई ये क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। Numan, Numan, can you check if Ashar is in? Actually, I didn't receive any request of any guest who is joining. So maybe he's trying, but I didn't receive any request. Okay. मेरे ख्याल में वो भी कल वाला लिंक ट्राई कर रहा होगा। मैं भी पहले कल वाला लिंक ट्राई कर रहा था जो कि काम नहीं कर रहा। नहीं, मैंने भी वो लेटेस्ट लिंक सेंड किया था अपनी चैट में, तो आई एम श्योर ही मस्ट बी ट्राइंग द न्यू लिंक बिकॉज ही जॉइंड इन बिफोर बट somehow he couldn't connect his audio and then he has to go out again. Anyways, we'll wait. अगर वो दोबारा लिंक ज्वाइन करते हैं तो we'll take him in. तो हफ्सा, अभी आप चूंकि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चला रही हैं and you must also be checking out patients on regular basis. तो अभी क्या तनासुब है कोविड-19 के पेशेंट्स का और जो पेशेंट्स आ रहे हैं दूसरी अदर डिजीजेस के साथ? So, like you mean a rate of positivity or Exactly. So somehow rate of positivity is higher than ever. देखिए पहले तो जब in my experience again I'm one physician with the 4 nursing home and some adult patient from 18 and onward I see. So March, April, May में जब US में आया था COVID-19, so it's already hit the very sick and the frail and elderly. और उनमें से बहुत ज़्यादा deaths हुई। उसके बाद slowly it calmed down in a way. It was why it calmed down because we were doing mask and social distancing and people were in lockdown. उसके बाद जब ये holidays season के साथ जब people got relaxed and it's more younger people and I can say they're not as
सिक अभी भी वही होते हैं जिनको chronic conditions ज़्यादा हैं, like they have other multiple risk factors, लेकिन positivity rates in younger people is a lot. I will say पहले था अप्रैल मई में कभी जो अब मेरे पेशेंट अदर देन नर्सिंग होम जो मेरे रेगुलर ऑफिस के पेशेंट्स हैं, एक दो कभी पॉजिटिव आता था, देन वी वर लाइक ओ माय गॉड शी इज पॉजिटिव और ही इज पॉजिटिव. Now it's kind of a routine, like every day I have like 4, 5, 6 people asymptomatic and they're positive. And then उसके बाद पूरी family positive होती है, and then wherever they work, their co-workers, lots of offices are open, people are start going to the restaurants and stuff. So positivity rate is high. New Haven, Connecticut, where I work, can state that there was a variant, the UK variant was also diagnosed in a couple of people. So I'm sure that there is जो variant जो नया है virus, उसमें है infectivity rate, transmission rate is high. Somehow people are not that sick, but infection काफी ज़्यादा है. And again, don't take this seriously as the other Dr. Saab was saying, because वो sick इसलिए नहीं लग रहा कि जो हो रहा है अब COVID-19 वो young और healthy लोगों को, so their immune system already is good. तो हमें लगता है कि ये deadly नहीं है, but the virus is still same. ये वही virus है जो पिछले साल से चल रहा है हमारे अंदर, and it has a high you know, it's a high risk of dying healthy, and somehow if you have, especially अगर आपके फेफड़ों में या sugar का मसला, it's very high risk to get sick with this virus. अच्छा, अभी एक और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है जो मेरे जैसे लेमैन के लिए एक्चुअली इट्स क्वाइट यू वुड से दैट यानी कि अजीब सी बात है. मसलन व्हेन वी कंपेयर पाकिस्तान विद इंडिया, सो मोर लेस अगर पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर की बात की जाए, लिविंग स्टैंडर्ड की बात की जाए और खाने पीने के तरीकों की बात की जाए, सो वी आर सिमिलर इन many different ways. But yes, there are differentiation as well. But as far as the living standard is concerned, so we are quite similar. और जब हम अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका में living standard is quite high. Even Germany की भी अगर मैं बात करूँ, जर्मनी में भी living standard is quite high as compared to many other Asian countries. तो इन्फेक्शन रेट की या डेथ रेशियो की बात की जाए तो जर्मनी एंड यूएस तो जिस दिन से कोविड-19 फैला उस दिन से ही ऑलमोस्ट यू नो एट द टॉप रैंक, at number one in terms of infection, in terms of death ratio. And then फिर आपने यूके स्ट्रेन की बात की, फिर साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन came into action. Then quite recently they have identified and discovered a new strain in Bavaria region of Germany as well. और इंडिया में भी COVID-19 is you know doing havoc. So India has hit quite hard with COVID-19. Even India is one of those countries जो कि risk countries में consider किए जा रहे हैं, जहाँ से आप traveling उस तरह से नहीं कर सकते. ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान में ये काफी कंट्रोल में रहा. अब कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्ली दे डिडंट रिपोर्ट द राइट नंबर्स, और पाकिस्तान में लोगों ने उस तरह से कोविड-19 के टेस्ट नहीं करवाए जिस तरह से अदर कंट्रीज दे रैम्प्ड अप द टेस्टिंग प्रोसेस. तो एज अ डॉक्टर आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज द फैक्ट एंड व्हाट इज द रियलिटी? आई एम श्योर पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, बट आप क्योंकि you must be in touch with a lot of medical fraternity in Pakistan as well, so you must be having a point of view about it. So maybe both of you can answer this question one by one, and Dr. Saif, if you would like to have your opinion as well, you can also join the discussion board. जो आम तासर है वो तो यही है कि पाकिस्तान में जिस तरह हमेशा मेला लगा होता है, घर से बाहर जाएं तो उसी तरह से मेला लगा हुआ है. किसी को कोई परवाह नहीं है कि भाई कोविड है या नहीं है, या अगर वो हो जाएगा सब कहते हैं कोई नहीं खैर है, अल्लाह मालिक है, which is true. तो और टेस्टिंग जो है वो बहुत रेयर है, बहुत कम लोग टेस्ट करवा सकते हैं. टेस्ट गालबन शायद 5,000 या 8,000 का है. तो जिस बंदे को ये हो कि उसने रोटी खानी है कि टेस्ट करवाना है, तो वो प्रॉब्ली घर के लिए रोटी खरीद लेगा, टेस्ट तो नहीं करवाएगा. इसलिए पाकिस्तान के बारे में ऑब्वियसली ये वायरस है, हर जगह पहुंचा हुआ है. उसके ना तो क्या कहते हैं तेजी से फैलने के बारे में कोई शक है किसी को, और ना ही उसकी क्या कहते हैं जो डिजीज वो काज करता है उसके ट्रिवियल होने या लीथल होने के बारे में कोई शक है. तो ये सिर्फ ये है कि वहाँ पे क्योंकि टेस्ट हुए ही नहीं है, मतलब लोगों को जुकाम होता है तो जाते हैं,
तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हुआ, खत्म हो गया। इसलिए ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में फैला नहीं है, पाकिस्तान उसी तरह से प्रोबेबली फैला है जिस तरह से बाकी दुनिया में फैला है, लेकिन उसके लिए कोई सबूत नहीं है और प्रोबेबली सबूत होगा भी नहीं। ये इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में भी लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत लीथल डिजीज़ है। जब होती है और किसी को सीरियस होती है तो देन दे हैव नो वे। Yeah. No, you're right. Numan, I'll share a couple of thoughts here too. So, yes, he's right. The virus is same. Virus तो दोनों जगह फैक्टर है कि पाकिस्तान में क्यों ज्यादा नहीं है और डेथ्स क्यों नहीं हुई और पाकिस्तान में डेथ्स छुपा रहे हैं. One thing is, I'll tell you for sure, I have lots of friends who are working in Pakistan as physician. Deaths को छुपाया नहीं जा सकता. Yes, they're accurate. There are like 7,000 people so far. It's a COVID diagnosis, but the thing is, even US में भी जो people जिनकी death हुई है ना, they are elderly. So I'm talking about 85 plus. ठीक है, so ज्यादातर लोग जो हैं वो कोविड को होकर they recovered, ज्यादातर majority. तो जिनकी death हुई है they are older, और पाकिस्तान में older people इतने ज्यादा और एक ही जगह पे इतने ज्यादा नहीं है, like 300 सारे older patient in one room. And the way this virus spread and affect, and then deaths is just on top of each other. It's that's another big factor too. देखिए, आपके घर में एक बुजुर्ग होते हैं पाकिस्तान में, and then उसके बाद चौथे पांचवें घर में कोई एक और बुजुर्ग होंगे. So it's very hard to transfer from एक घर से दूसरे घर में जाना. लेकिन अगर एक ही घर में 100-150 आपके लोग हैं, which is called kind of a nursing home here. So that's another factor too. कि elderly population यहाँ पे ज़्यादा है and the nursing home यहाँ पर ज़्यादा है. Second thing is, I feel like कि यहाँ पर जो था the way people travel in US and UK, पाकिस्तान में उस तरह का travel नहीं होता है. पाकिस्तान में देखिए, आपका घर यहाँ पर है तो आपकी जॉब उसी शहर में है और आपके रिश्तेदार भी उसी शहर में हैं. So people actually naturally logistically they do not communicate from one city to the other city. यहाँ पे 45 minutes तो आपको commute होती है US में, average commute 45 minutes, meaning आपका different town में घर है, sometimes you cross the state to go to work. So and airline travel, come on, it's way higher in these countries than in Pakistan. और पाकिस्तान में और इंडिया में अगर गया भी है वायरस, it came from other places, and then the travel was more kind of a ban in Pakistan than in this, US and UK. So that's another factor. Second thing is, yes, the testing, 100% he's right. It's expensive to test. There's no free testing, and people don't do that. My sister is a gynecologist in Pakistan, and before delivery they need to do a test. So she was doing antibodies test because just to see, you have it. तो मजे की बात है कि जितने लोग गांव में थे, गांव के जो लोग हैं आसपास के गांव के, they all had antibody positive. Or the more people in the city area, they have availability of mask and their awareness of this virus, and they were socially distant and not, kind of self-lockdown. So they were negative. So there is a little bit of herd immunity over there. In low socioeconomic state, let us say, people just didn't care and they just didn't want to believe that's there. But the virulency of this virus, the danger of this virus is same. This is a virus which did not see, your race, your gender, your age, your, logistic issues, your zip where you live. It does affect everyone the same way. But the difference, I think but I personally think these are the differences. One is older population are more here, they're more confined in one place, and the travel is more. ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा खास नहीं किया. गवर्नमेंट जिसका क्रेडिट लेती है बिकॉज दे आर द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज. बिकॉज मैं जर्मनी से जब कंपेयर करता हूँ, सो वी आर इन काइंड ऑफ अ पार्शियल लॉकडाउन फ्रॉम लास्ट 1 year. I'm confined to my house. I am allowed to go out of my house during the day, but with all precautions, social distancing, wearing mask on public transport, wearing mask in the grocery shop. So only grocery shops and medical stores, they are open, but rest of everything is completely closed.
Restaurants are completely closed. You can just have takeaway, you can have your meal, and you can just go wherever you would like to, but you are not allowed to sit in the restaurant. Then when we compare the overall situation in Germany, so रात को तकरीबन I think 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, you are not allowed to go outside of your house until unless it's really urgent or you are in a kind of emergency situation. So I mean, government is doing a lot. If I would say that Germany may government has been doing a lot. They have playbooks, they have protocols for each and every industry. But on the other hand, when I look back to Pakistan and see people over there, वहाँ पे शादियां भी वैसे ही हो रही हैं, वहाँ पे लोग उसी तरह से बाजारों में इकट्ठे हैं, किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोगों ने मास्क पेन या तो पहने नहीं हुए, अगर पहने भी हैं तो वो भी आपके नोज से एंड माउथ से they are just hanging in your neck, so it's not like proper mask that you are wearing. So इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा वजूहात यही हो सकती हैं जो अभी आपने क्लैरिफाई की हैं, that number one, testing is not going on, और दूसरा elderly population उस तरह से ज़्यादा नहीं है. When we compare European countries, तो यहाँ पे elderly population comparatively ज़्यादा है as compared to Asian countries. And और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं नहीं ये सबको हो जाएगा, but you can actually protect yourself. It's not like it's just it's like must के आप सबके होकर जाना है. So try not to get this virus. It's not like ज़्यादातर लोग बच गए हैं. So because I don't know if I get infected, how it will work with my immune system. Because it's still so many things are unknown for this virus. Simple thing, hand washing, mask, or social distancing you can protect yourself. And I'm talking about myself with my experience too. Like in March, April, May, June, it was very tough. And yes, somebody has to be there and to listen to the lungs of the patients. And और ये वो नर्सिंग होम के वो पेशेंट्स हैं जिनको हम आईसीयू में नहीं भेज सकते थे because ICUs and hospitals were over. They were very busy and we changed the code status के इनको hospitalize नहीं करना, family से discussion करना. But 6-7 days to sometimes 6 weeks जिस बंदे को COVID हुआ है उसको उसकी take care करना is us. And I did not get infected. Just not like because you have some strong immune system and stuff. No, simple is a mask, proper way of covering yourself and hand washing and simple जो guidance आपको है, is already available since the beginning of the last year. And if you really follow those guidelines, you can protect yourself and your families. And don't let your guard down yet because still अभी तो vaccination करने के लिए काफी time लगेगा हम सबको. I think 2021 still stayed the same as the last year was. Yeah. I think some questions they have popped up in our question board, so I would share the question on the screen. So this question is being asked by Miriam Robson. And she's asking, many haven't been affected and they are with COVID patients every day. Is there a sign of immunity? No, I just explained that since June, I get tested every week twice. It's part of the regulation because I go to 4 different places, so I have to get tested twice. And it's a PCR test every time. So I was negative. I remain negative, not because I have stronger immunity or something. It's just because the virus did not reach to my lungs yet. All right. So it is a possibility that if you get in touch with someone who is COVID positive and you have conceived that virus, and that virus might be surviving somewhere on your body, maybe on your hands, maybe in your nostrils, but it hasn't reached to your lungs. So if it hasn't reached to your lungs, then probably you will not get infected or you will not get sick. No, it doesn't stay on surfaces and hands. That's why hands, of course, because that's why the hand washing comes from there. That's why they said do not touch your nose or eyes, and it can go any mucous membrane goes to your nasal passages. The virus का test जो होता है वो through nose is important because that's where you inhale.
lungs तक पहुंचने तक तो you are probably already in hospital. So my point was saying that we test through nose. So basically आप सबसे ज़्यादा settle करता है oropharyngeal area, यहाँ पर ये settle रहता है, and then people get symptoms with that. If yes, initially you are asymptomatic for 5 days, but if there is enough viral load, तो आपको symptoms आते हैं इसके साथ, and you can detect even before going to the lungs. Right. So I think हमारे पास still we have 30 minutes to go with our live discussion. So Babar, आपसे मेरा ये सवाल है कि people have a lot of fears and conspiracy theories attached to COVID-19 vaccine. और आई एम श्योर आप या आपके बहुत से colleagues जो मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, they have been vaccinated. So what would you like to tell about this vaccine? Some people are saying, even today I was reading an article that COVID-19 vaccine can have an impact on your RNA, जिसको हम ribonucleic acid, DNA and RNA में भी लोगों को आसानी के लिए मैं ये कहता हूँ that it can change your genetic makeup. It can impact your DNA in certain ways. Today I was reading that article in one of the quite authentic website about medicine and about infectious diseases. और दूसरा एक और मैं आर्टिकल यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, मेंशन करना चाहता हूँ that I was Norway ने, I think Norway, they have given, I'm not sure it's Norway or any other country, but they have given vaccine to 30 elderly patients. Out of those 30, 23 patients, they have died due to certain reasons after a couple of days having this vaccination. And then it was said that doctors should ensure कि जिस बंदे को वो वैक्सीन लगा रहे हैं, he should not be having some other underlying conditions. So I'm not sure, because again, I would say I'm a layman and I'm not an authority. I'm just talking about some news or conspiracy theories which are floating over the internet, and a lot of people, they have kind of a belief in these conspiracy theories. So how would you explain COVID-19 vaccination as a medical professional? And if you have already had it, so maybe you can also share your experience. Well, कोविड की वैक्सीन तो अभी आई है. अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में ही अमेरिका भी उससे एक्सेप्शन नहीं है कि जो वैक्सीन्स हैं बच्चों के लिए, फांसी टीके जिनको कहते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत सारी जो है ना वो रेजिस्टेंस है. लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं लगवाना, अगर लगाएंगे तो हमारे बेटे जो हैं वो उनको कुछ हो जाएगा. जो उनमें कोविड का वायरस, एड्स का वायरस लगा रहे हैं, या और इस तरह की हजारों बातें हैं. आज भी पाकिस्तान में जो है ना पोलियो वैक्सीन लगाने वाली टीमों को जो है वहाँ पे लोग मारते हैं. और इसी तरह से यहाँ हम अमेरिका में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे, खासतौर पे अगर रूरल अमेरिका में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, वैक्सीन हमारे बच्चों को नहीं लगेगी, हमारे बच्चे जो है ना वो कुदरती मुदाफियत पे रहेंगे. तो ये तो सारी दुनिया में है. पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है. पाकिस्तान में जहाँ जब तक लोगों को खुद पढ़ने लिखने की आदत नहीं होगी, अगर पाकिस्तान में तालीम ही नहीं है, और या अगर है क्या कहते हैं खासतौर पे रूरल एरिया में, तो लोगों को सिर्फ उर्दू पढ़नी आती है, तो बेचारे वही पढ़ेंगे या वही देखेंगे जो या तो उनको मोहल्ले का या कोई मौलवी बता देगा या कोई और सरकर्दा आदमी बता देगा कि ये इस तरह से आ रहा है, तो उन्होंने उसी की बात को यकीन करना है. वो खुद तो पढ़ नहीं सकते, या अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ एक ज़ुबान में, जो भी उस ज़ुबान में लिखा हुआ मवाद होगा उसी को पढ़ेंगे. तो ये तो एक बात है. जो वैक्सीन हैं, कोविड हो या पोलियो हो या कोई और पुरानी बीमारियां हों, लोगों के उनके बारे में, लोगों के ज़हन में उसके बारे में शक व शुबहात तो हैं, और उसको सिर्फ एजुकेशन से ही दूर किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है. तो यही बात कोविड के बारे में है कि कोविड के बारे में तो खैर अभी पता ही बहुत कम है, और जो इसकी वैक्सीन तो आई हैं वो भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन के ऊपर हैं. सिर्फ प्रोबेबली जो उनका डाटा मौजूद है वो यही है कि अगर वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, और अगर वो इफेक्टिव हैं तो कितने अरसे बाद हैं, लेकिन और उनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई हैं या नहीं है. जो बात आप कर रहे थे कि जी 30 बूढ़ों को वैक्सीन लगी और उसमें से 2 या 3 मर गए, तो अगर आप ये देखेंगे अगर 90 साल के 30 बूढ़े कहीं पे रह रहे हैं, तो आप ये भी देखें कि उनका वैसे पर ईयर डेथ रेट कितना है. अगर साल में 2 मरते हैं और वही 2 उस वक्त मरे हैं, तो इट मीन्स कि कोविड हैज़ नथिंग टू डू विद इट. लेकिन हाँ, जो है अगर किसी बंदे को, जो प्रोबेबली जो सबसे बड़ी अननोन है, या जो सबसे बड़ी चीज़ वैक्सीन के बारे में ये कह सकते हैं, अगर किसी को
कोई अंडरलाइंग डिजीज है उनकी जिस्म में और दूसरी बीमारियां हैं, तो ये हो सकता है कि आप कोविड की वैक्सीन उनको लगाएं तो उनके अंदर उतनी मुदाफियत पैदा ना हो या बिल्कुल मुदाफियत पैदा ना हो, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता। और ये मैसेंजर आरएनए अगर जाके तो सेल में क्या कहते हैं वो आपके एम्बेड हो सकता है, तो वो बात तो बिल्कुल सही है। हमें सबको पता है कि वो लोग जिनको के ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिंदगी में कभी मिली होती है, उनके जिस्म के अंदर वो वाला जो डीएनए या आरएनए है जो उनके डोनर का होता है, वो सारी जिंदगी कहीं ना कहीं ट्रेस होता रहता है। तो ये तो चीज होगी, मतलब है ऑब्वियसली भी इतनी रिसर्च नहीं है कोविड की वैक्सीन के बारे में, लेकिन डेफिनेटली है जो उसका आरएनए है जो वैक्सीन के अंदर डाला हुआ है वो कहीं ना कहीं तो बॉडी में एम्बेड होगा और उसके साइड इफेक्ट्स भी प्रोबेबली होंगे जो कि हमें अभी नहीं पता। लेकिन ओवरऑल इट लुक्स लाइक इट इज क्वाइट सेफ वैक्सीन। मैंने खुद भी लगवाई है, मेरे तकरीबन सारे जो 7 लोग काम करते हैं उन सब ने लगवाई है। तो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम नजर आई है अब तक वो यही था कि या तो उनको जहाँ पे इंजेक्शन साइट है वहाँ पे काफी ज्यादा दर्द हुई, पहली डोज पे कम लोगों को हुई, दूसरी डोज पे ज्यादा लोगों को हुई, या कुछ लोगों को मसल पेन्स जिसे कहते हैं ना, पट्टियाँ दर्द होया, और जो है उनको क्या कहते हैं फीवर हुआ, लेकिन वो भी बड़ा शॉर्ट लिव था, लाइक लेस देन 10 hours or so। तो लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ अननोन अबाउट द वैक्सीन। अब ये नहीं, यू कैन नॉट गिव इट अ क्लीन चिट। तो यानी कि इसका मतलब है ये कि अगर किसी को वैक्सीन, क्योंकि मेरे भी बहुत से दोस्तों को ऑलरेडी दे हैव बीन वैक्सीनेटेड, बिकॉज अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं, आई हैव लिव्ड एंड वर्कड देयर फॉर नाउ 5.5 years, so मेरा एक अच्छा खासा नेटवर्क है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे काफी दोस्तों को दे हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड, क्योंकि सऊदी अरेबिया का अगर वैक्सीनेशन की रेशो आप चेक करें तो ऑलमोस्ट 1.1 million people have already been vaccinated. I'm not just talking about the people who are affiliated with the medical professions. People, I mean, normal people, civilians and normal even expats and local citizens. 1.1 million people, they have already been vaccinated. And I didn't hear anything, you can say, suspicious about it so far. और जहां तक आपकी बात अगर मैं नोट करूं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको वैक्सीनेशन लगती है तो मैक्सिमम इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल रिएक्शन फॉर एनी अदर वैक्सीनेशन, कि आपको बुखार चढ़ सकता है, आपको मतली आ सकती है, या आपको आपके मसल्स में पेन महसूस हो सकती है, सो समथिंग लाइक दैट व्हिच इज प्रीटी नॉर्मल फॉर अदर वैक्सीनेशन। वो तो सारी चीजें तकरीबन सारी वैक्सीन के लिए ही ट्रू हैं। जब भी वो बॉडी में रिएक्शन क्रिएट करती हैं तो हर बंदे का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, तो हर बंदे के इम्यून सिस्टम के हिसाब से कोई ना कोई रिएक्शन नजर आता है। अगर बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो लगता है कि हो सकता है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, प्रोबेबली दे आर इम्यूनोसप्रेस्ड और समथिंग। जैसे कि आपके डायबिटिक्स होते हैं, आपके रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, या जिनको कैंसर या कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, वो सारी चीज़ें तो हैं। तो थोड़ा बहुत जो है दर्द होना इंजेक्शन साइट पे, या पूरे कंधे में दर्द होना या बाजू में दर्द होना, दैट इज समथिंग यू शुड एक्सपेक्ट। लेकिन इससे ज्यादा प्रोबेबली किसी को कोई प्रॉब्लम इमीडिएटली नजर नहीं आएगा। राइट। तो मे बी एक क्वेश्चन जी, हमसे आप कुछ कहना चाह रही हैं? No, I will add a couple of things too. देखिए जो कोविड हेल्थ केयर, ये जो पैंडेमिक है, दिस इज हेल्थ केयर क्राइसिस। ये कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, इट्स अ हेल्थ केयर क्राइसिस। सो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स to get their education first, get the data from the credible sites, और उसके बाद लोगों को awareness दें। Vaccine look, Maria Robson, she asked a question right here that I don't trust the vaccine. It Exactly. looks like need more testing. Yeah. So this is not only her question. So, I've been asked that question many times. So लोग कहते हैं इतनी जल्दी वैक्सीन क्यों आ गई? भाई we are in 21st century. जब साइंस इतनी एडवांस कर गई है, हम कोई 1918 के फ्लू की बात नहीं कर रहे, इसे 2020 की respiratory virus की बात कर रहे हैं। We have technology that we can make vaccines earlier. December of 2019, जब COVID-19 चाइना में डिस्कवर हुआ था, it was decoded, उसका DNA was decoded already within 40 days. तो DNA जब वायरस का आपको पता चल गया, you can already make a vaccine. वैक्सीन तो बननी शुरू हो गई थी जब टेस्टिंग शुरू हुई, जून और जुलाई में जब टेस्टिंग शुरू हुई। It's not like it came early. देखिए दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स ऑफ एनीथिंग, और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट।
उसकी डिफाइन कर रहे हैं आपको शॉर्ट टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म मीनिंग 15-20 मिनट्स में आपको कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन तो नहीं हुआ, मीनिंग के इसलिए आपको वैक्सीन लगा के 15 मिनट देखते हैं कि आपको उसको सांस की तकलीफ तो नहीं होगी, कोई रैश शुरू हो गई है या थ्रोट स्टार्ट क्लोजिंग और समथिंग। एंड व्हाट लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे, हमें नहीं पता, अभी तो थोड़ा अरसा हुआ है। आपको बहुत सारी वैक्सीन पहले आई हैं जिसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने होते हैं, विद इन 45 डेज एवरेज हो जाते हैं। दैट्स वाई वैक्सीन जब जून में शुरू की थी लगानी, 60 डेज उसको उन्होंने देखा था कि लोगों को लगाई है, देयर नॉट मेनी मेजर साइड इफेक्ट्स, दिस इज लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, देयर इज नो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। अगर मुझे वैक्सीन लगी और 6 साल बाद अगर कुछ मुझे तकलीफ हुई है, मुझे मेमोरी मेरी खत्म हो गई है या कुछ हुआ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, इट्स जस्ट happened. That's why my course of my illness or disease or whatever happened to me. So vaccine is very safe. Messenger RNA is RNA. It's not a DNA. RNA cannot make my DNA. It's factory made messenger RNA. It has nothing to do with the virus. जब वायरस आपके अंदर जाता है तो वो तो सब कुछ लेके जाता है। वो वायरस जो है वो उसके अंदर में आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। जब वो आप लेकर फिर भी बच जाते हो तो अब तो डीएनए उसका तो अंदर चला गया आपके। You are not worried about that, but worried about this messenger RNA, which there's no science behind it. It cannot affect your DNA. It cannot make you a different person. It just doesn't work that way. We are not that advanced that we can create or change human DNA from a messenger RNA, which is in this vaccine. अगर ठीक है, लोगों को अगर confusion है इसकी messenger RNA vaccine इन्होंने नहीं लेनी, which I think is the safest than any other vaccine, and why it's different because it's just we are more advanced now. There are other vaccines coming, Johnson & Johnson, AstraZeneca. There are vaccines are coming which don't have messenger RNA. So take that. It's way better to take the vaccine. Vaccine is not 100% stop you to getting infection, but it will decrease the death rate. And that's very, very important. We are dying because of this virus, and we need to stop this whole pandemic. But that's the only treatment. There's no other treatment. That's the only treatment right now, the vaccine. And that's I answer Robson. Yeah. जो आप नवाना आप बात कर रहे हो ना, जो आर्टिकल्स आ रहे हैं मैगजीन्स में और दिस एंड दैट, people will talk about that. This is the era of social media. We can spread things very quickly, and but we just have to make sure कि हम आगे उनको spread ऐसे करें. We don't become the part of that ignorance. So we just have to make more awareness by credible sources. Or please, I ask other people to, कुछ ऐसी आपको फॉरवर्ड ईमेल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं जिसमें सिर्फ डराने या so people are dying with vaccine or this and that. So please try to read it more carefully, think about that, research on your own, and stop forwarding all these things to do. And I would share one experience that is happening across America. Steph, maybe before you share your experience, I just wanted to tell the viewers that Babar has to go somewhere. He has some, you can say, appointments, and he was preoccupied with them, so he had to leave the call early. So again, thank you very much, Babar, for being part of this live stream and providing us insights based on your experience. Yes, Steph. I think अब आप अपना experience और knowledge हमारे से share कर सकते हैं. Yeah. So regarding the safety of vaccine, there are news, authentic news, that many medical staff, paramedical staff, fighting with the hospital administration that they want the vaccination first. So they are eager to get the vaccination first. They want to be ahead from others to get the vaccination and be safe. And many are lying that they are front workers. They take the patients, the receptionists, the nurses, everyone. So if vaccine is not safe, then medical staff won't be fighting to get it. Yeah, it's pretty logical कि अगर एक डॉक्टर जो सा है वो खुद को वैक्सीनेटेड करवा रहा है,
So it means that that doctor has kind of a firm belief in the system, on the effectiveness of the vaccine, and it will definitely add value to the, or it will help us to combat this pandemic. अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो काफी इंटरेस्टिंग है. इट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज जहाँ पे हम पाकिस्तान की मेडिकल फर्टिनिटी की बात करें या पाकिस्तान के डॉक्टर्स की बात करें, so most of the research about vaccine and vaccination and COVID-19 that is being done in West. Let's put it that way. क्योंकि अभी तक जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट इंटरनेशनल कंपनीज ने किया है, जैसे फाइजर की हम बात करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की बात करते हैं, देन मोडर्ना की बात करते हैं, जिन्होंने ये वैक्सीन जो सी है वो आप ये कहने के बनाई है, एंड नाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो पाकिस्तान में जब हम कोविड की बात करते हैं तो ये कहना क्या बिल्कुल बजा और दुरुस्त है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की जो SOPs थी उन्होंने कोविड-19 को कंट्रोल करने में बड़ा आप ये कह लें कि जबरदस्त किरदार अदा किया है, या इट हैपेंड जस्ट बिकॉज द फैक्ट दैट वी आर नेचुरली समहाउ सेफ बिकॉज ओवरऑल पॉपुलेशन जो सी है यंग है, वी डू नॉट हैव ह्यूज नंबर ऑफ एल्डरली पीपल, एंड उस तरह से वहां पे फैली नहीं. So there are basically two separate theories about this. Number one is that Pakistani people are more resilient for the diseases. They already have some type of immunity. They daily fight with germs and viruses and bacteria. So they were able to fight with this virus well. And the other thing is that there is not enough testing. And if someone dies, they go back, their dead bodies are going back without having any test on them. So no one knows how they died. So there are two main reasons. One is better immunity, probably, and number two is far less testing. And the numbers are not shown, the data is not there. Okay, pretty interesting. So finally, we have our one of the doctor who was part of our panel. He's on board. तो उनके थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आ रहा था, तो हम काफी देर से ट्राई कर रहे थे कि किसी तरह से उनको कनेक्ट किया जाए, बट समहाउ अभी वो कनेक्ट हो गए हैं, thanks to the connectivity or thanks to the system that somehow he is part of the live stream now. So Ashar, इससे पहले कि मैं आपसे कोई कोविड-19 के बारे में सवालों जवाब पूछें या लोगों के सवाल आप तक पहुंचाएं, so maybe kind of a brief introduction about you. Can you guys hear me? Yes, we can hear you, we can see you as well, finally. Okay, I actually connected through my phone now. I gave up on the computer, so maybe so briefly, I graduated from Punjab Medical College, Pakistan, and I did my master's in public health, and also took a diploma in computer sciences, came here, did some other courses, and finished a fellowship in infectious disease in 2011 after graduating in internal medicine from New York. So I'm practicing physician in Las Vegas for last almost 10 years in infectious disease, and of course last year was all about COVID. I believe I probably saw most patients than anybody else in this pandemic. So that's about me. So you guys can go ahead and ask me questions. If you have any questions I can answer, that would be great. मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस हॉट है, अभी हम बात कर रहे थे कि एक तो आप अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हैं कोविड-19 के बारे में एज अ होल, क्योंकि यू आर आल्सो इन द फ्रंट एंड इन ऑर्डर टू कम्बैट दिस पेंडेमिक. तो आपका इससे कैसा तजुर्बा रहा एज अ डॉक्टर एंड एज समवन हु इज डीलिंग विद द पेशेंट्स डायरेक्टली, और दूसरा थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में आपका पर्सपेक्टिव, दैट व्हाट डू यू सजेस्ट टू अ कॉमन मैन, दैट इज वैक्सीन सेफ टू हैव, what kind of precautions one should take before taking the vaccine, or what could be the possible symptoms after the vaccination? Okay, so let me start with my experience with COVID. So I know people have a lot of concerns, questions,
So what we need to know at this point is that, it's not a simple viral disease. It's a multi-system disease that has killed millions of people already. Unfortunately, who is going to get sicker and who is not going to make it, nobody can tell. So I was talking to one of my colleagues, and based on my experience over the last, year or so, treating thousands of patients, you can have any systemic disease that is described in a textbook from COVID. And I repeat it because I have seen people dying with, heart failure, with stroke, with pulmonary embolism, with gangrene, with bowel perforation. So you pick up a textbook and read it, and then you start going one by one. And COVID has caused that complication in patients. So having said that, that is the reason we have close to 500,000 deaths already in the US. Most patients do survive, yes, that is true. Medications that we have on board do seem to help. The concern is unpredictability. That when you have a patient who's in the hospital, they already were sick probably for a few days. When they make it to the hospital and when they end up in ICU, and you treat them with these medications and plasma and the antiviral and all the unconventional and conventional therapies, once they start developing complication, it's hard to take a step back and kind of get them better. Now we have saved quite a few lives, there's no doubt about it. I mean, thousands of lives have been saved for sure. But unfortunately, where we stand today, and I apologize, I'm not sure what our audience is, but if it's mostly in the US, where we stand today as Americans, we are left with no choice. You go ahead and get your vaccine, or you will get COVID. Simple as that. It is going to get to you somehow or the other. And the challenge at that time would be, what category you fall in. Are you going to be, the one that would have mild symptoms and get better? Are you going to get really sick and end up in the hospital? And are you going to be among, people who unfortunately would end up dying? So no matter what kind of vaccine, I'm not sure how much you talked about, and I apologize for, not being able to join in the beginning. No matter what kind of vaccine you end up getting, it's still far better than actually getting sick from COVID and not knowing what's there for you. Yeah, right. And I think we have one question on the screen, which all of you can see, that we have most advanced mass screening platform in the world. This is digital health. Then again, similar kind of question is coming from Weil. In one K-plex, we can trigger up to 12 type of test AG and antibodies. To be very honest, I have no idea about this question because it seems to be pretty technical. So anyone who would like to address this question from the panel, Saf, Hafsa, or Ashar? Can you repeat the question, please? I'm sorry. It's saying in one K-plex, we can trigger up to 12 type of test AG and antibodies. I don't know if it's a question or it was just seems like it's a comment. The person is saying that we have most advanced screening platform. I don't know where he's talking about, in US or somewhere. And you cannot, AG mean antigen. He's right. It shows that we can test 12 types of antigen and antibodies. They're two different tests. You just cannot do that two different tests with one K-plex. So I think it's just trying to make a comment or something. I don't think so. It's a question. Yeah, right. So then we can just simply ignore. We just have last 3 minutes to go. If there would be any question, we can take it.
because I'm checking all the platforms somehow on StreamYard, on Restream chat console. I could just see the questions which are coming from LinkedIn, but I'm not being able to track the questions which are coming on Facebook. So let me check on my mobile if I could find some new questions which are coming through Facebook live stream, and then we can talk about those questions. Otherwise, we just have 3 minutes to go, and we can talk about the safety of the vaccine. I think Hafsa already elaborated quite in detail that it's pretty safe to have this vaccine, and Babar, he also gave us quite detailed perspective about the effectiveness of the vaccine and so many things. They are under research, and we cannot talk about these things, and we cannot talk about the outcomes. So अशर आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें, बिकॉज हफ्सा ने कहा कि वैक्सीन जो सी है, इट्स सेफ टू हैव दिस वैक्सीन, बिकॉज और बाबर ने आपसे पहले बाबर कॉल में थे, उन्होंने भी ये कहा कि वैक्सीन इज जस्ट लाइक ऑल अदर वैक्सीन, जो बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं, स्पेशली लोग जो पाकिस्तान में परेशान रहते हैं कि ये वैक्सीन क्या है, ये डीएनए चेंज कर देगी, इसमें ये तो इसमें वो है, इसमें माइक्रो, इसमें ऐसा कुछ है। तो आप इसमें बारे में, ताकि लोगों को जो उनसे हैं लोगों का फियर खत्म हो वैक्सीन से रिलेटेड। So I will make it very simple. So currently in the US, we have two vaccines, which are both what we call mRNA vaccine. So all it does is trigger an antibody protein that would help you fight or avoid coronavirus complication and coronavirus COVID-19 disease. It does not affect your DNA because it does not get inside the nucleus. It is not supposed to cause antibody on the testing. They are still working on a test that can detect spike proteins. If that happens, of course, you will hear it in the news. The other vaccine, which is conventional, which is what we call vector viral vaccine, that should be probably the next one coming in the US, and that hopefully is a one-dose vaccine. That is similar to most of the vaccines we received growing up. As you know, we all got our vaccines. The remarkable thing about these vaccines is that they are bringing these vaccines in record time. That does not mean that they are compromising with the process. What it tells us is that they have combined the research that was being done for last 20 years. And they were able to put that in a practical perspective and have the vaccine available for us. The process was followed and everything was made sure, including trial, safety, efficacy. So I'll re-emphasize on my point on that. The longer you wait, the higher the chances that you're going to get sick from COVID. Yeah. With the activity and infectivity, and with what we are hearing about the new strains that are coming, with the fear that these strains will spread very rapidly, no one in any part of the world is going to be the one that's not affected. In the US, we still have less than 20% of the population either immune or vaccinated. So we have a long way to go. We still have close to probably 250 million people plus that are not either, immune or vaccinated. So if we do not listen to our, experts, then these hospitals will continue to fill with COVID patients for next 6 months. And it probably still can happen if we go ahead and be responsible for ourselves and our loved ones, and of course other people living around us. We can put an end to this pandemic. Right. Thank you very much, Asher, for this. You can hope that it has something to do with the vaccination. So if we would like to take care of ourselves and the people around us and our loved ones, and that definitely we should all go for vaccination without any fears in mind. So maybe before we wrap up our today's session, so last comments from all of you, one by one, starting from Hafsa. Hafsa, what would you like to advise
people around the world at this point in time. Right now, pandemic has started last year, so it's almost like 1 year. People know about COVID a lot. There's so many information floating all over on internet and so many other digital media platforms. So as a specialist, as a doctor, what would be your recommendation to people, what they should do from today onwards to keep themselves safe, healthy, and protect from this pandemic? It's the same thing that we don't let your guards down yet. अभी देखें, अभी तो सारे लोग वैक्सीन लेना शुरू भी करें, फिर भी हमें साल 2 लगेंगे, majority of the people around us to get vaccinated. So having a mask, a bit of social distancing, hand washing, very, very important. This virus it's part of our life now. It's not going anywhere. लेकिन हमें how can we protect each other और अपनी family और friends को किस तरह बचाना है? So उसके लिए आप because people are anxious, people are tired. There's a pandemic fatigue. People wants to go out. People wants to travel. Which is good for for many reasons. Keep in your mind that you are taking that risk. Maybe you can survive, but you can give it to someone who you don't know and how they will handle it. So mask पहनना अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, it's a service and it's as a human it's a responsibility to protect others because we don't know हमारे एक्शन से दूसरे पर्सन को कितना इफेक्ट हो सकता है and try to get अगर आपकी आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो वैक्सीन्स प्रोवाइड नहीं कर रही, so try to push them, try to push your legislators, try to write to them and ask, demand for this vaccination, because I feel like during this pandemic we felt like as a human this is our right now to survive. And we have to do better than this virus already. We can't just let it win more. So please, even Pakistan में भी और दूसरी जगहों पे भी अगर गवर्नमेंट आपकी कोशिश नहीं कर रही, you have a right to demand. Right. Thank you very much, Afsa. Dr. Saif, last comments from your side before we wrap up today's session. I would say क्या लोगों को बताना चाहेंगे, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? I got my vaccine. You also go out and get yours as soon as possible. Wear mask. Wash your hands as often as possible. Otherwise, sanitize with alcohol-based sanitizers. Meet less people. Go out as less as possible. Connect with people over video apps like FaceTime, WhatsApp, Zoom, or whatever, and restrict yourself to your job, to your home. Perfect. Ashur, last comments from your side. आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को who are watching us right now, that what should we avoid, what should we do, and how can we cope up with the stress which is being caused by this pandemic and these partial lockdowns and so on and so forth? So in the end, I would like to emphasize again on your role to minimize your interaction with other people until you are either immune or vaccinated. And even after that, until everybody is vaccinated or immune, we should not have huge social gatherings. The worst thing that happened in the US was after Thanksgiving and New Year, and we know the reason. People traveled, more than 1 million people traveled every day for almost on a period of 4 to 6 weeks, causing more than 100,000 deaths in last 3-4 weeks. And it's going to continue if we don't act and behave and follow the experts' advice. There's no debate on how this COVID is spreading and what's the way to prevent it. On the vaccination side, I will re-emphasize again what I just said before. Get your vaccine whenever and wherever you can get it. Hopefully, the new government is going to release more vaccination. There have been at least 3 other companies that have completed their phase 3 trials. So over the next few weeks, we might have 3 additional types of vaccinations available.
So that would bring the total to 5 just in the US. And if we can get, let's say hundreds of millions of vaccines available to us, we can start giving people more. I work with different organizations and clinics here in Las Vegas. Our infectivity rate is more than 20% for last 6 weeks, which is alarming. So what we have done is, requested the health department to release vaccination to our private clinics also. And if that happens, we can vaccinate people in a better way. And of course, we can vaccinate them quick enough. Otherwise, the rate of vaccination that is going at this point, even just to vaccinate Americans, it's going to take 1 year, which is not acceptable. So, like I said, we're pushing at every front that we have more vaccines available. And then in the last part of my conversation, I will re-emphasize, please follow the guidelines, follow protective measures, get your vaccine, save your loved ones. Thank you so much. Right. Thank you very much, Asher, for your remarks. And in the end, what I would like to say, first of all, thank you very much to all the panel members, Dr. Asher, Dr. Hafsa, Dr. Saf, and Dr. Babar, who just left the call due to some personal engagements. Thank you very much for being part of this live stream. I would like to pay my gratitude that you got time out of your busy schedules. I'm sure as a doctor, especially in US at this moment, you must be very, very busy. तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने अपनी एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी ओपिनियंस शेयर की लोगों के साथ. So we really appreciate your time and effort and your sense of sharing knowledge and experience with all others who are watching us out there. And to all other people, I would like to say formula is very simple. Wear mask, keep social distancing, hand sanitizing, अपने हाथ धोना, अपनी hygiene का ख्याल रखना, not for you only, but for people in your surroundings. You might be having a good immune system. Even if you get in touch with this virus, you might survive. But the people who might not be having good system, who have underlying conditions, so they might not recover. So better to keep distance, to keep yourself safe, not only for yourself, but also for the people around you. So anyways, thank you very much, everybody, for being part of this live stream. And we wish all of you safe and healthy life, even during the time of pandemic. So thank you very much. Take care and Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. I just want to thank you, Noman, for putting this together for all of us. Thank you. And I'm sure it's just the beginning, because we just, somehow we patched up, we formed this group, and credit goes to Dr. Saf, because we were talking about it. We had done a session, but that was something in general about COVID-19 and its effect on employment, its effect on economy as a whole. But this is the first time that, we had a panel of experts who are medical professionals. So basically, this is the first time that we are talking about it in detail and not in general. So maybe next time we could have some more sessions about it. Sure. Thank you. Yeah, thank you. Okay, then thank you very much, and take care wherever you are. Take care of yourself, take care of your family and people in your surroundings. This is very, very important, especially during the time of pandemic.